Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. How are you all doing? We are doing chapter 3, Land and Environment. Let's continue and see what we have to do next. Okay, important? Excellent. Recall. Now, in last 2 lectures, we discussed the location, the landforms of Pakistan. We discussed where they are exactly. We saw on the map and we identified those landforms like mountains, like plains. The third type of landform is plateau. But before moving on to plateau, I want you to see these 3 pictures which are right there on your screen. They are of these 3 different landforms: plateau, plain and mountain. Can you observe and identify that how these 3 are different from each other? Now, in earlier lectures, I did tell you that it is because of the shape of the earth or shape of the land that these landforms get their names. But now, looking at them visually will give you a better picture. Have you looked at them carefully? Now, I want you to move on with plateau. Plateau is basically up and down. Layman language में, simple language में अगर कहें तो it is उतार और चढ़ाव ज़मीन का. It can have mountain, it can have a plain, it can have a river next to it, it can be a desert area as well. So yes, plateau can be a combination of any 2 of these or any 3 of these. सबसे पहले पाकिस्तान के पोटवा प्लेटो से डिस्कस करते हैं. पोटवा प्लेटो की एवरेज हाइट है 300 to 600 meters above the sea level. It is also the valley of Swan. It comprises a valley of Swan, and at the same time, on all 4 sides, it has different features. On north, it has Kala Chitta and Margala Hills, a mountain range, Salt Range on the south, Jihlam River on the east, and Indus River on the west. So, do you see how a plateau is called a plateau and why a plateau is called a plateau? It has 4 different landforms on its 4 different sides. It has an average height of 300 to 600 meters above the sea level. Access जो है वो river को भी है, valley भी है इधर. So yes, this is the beauty of Pakistan. यही वो खूबसूरती है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में आते हैं. Moving on, बलोचिस्तान प्लेटो. बलोचिस्तान प्लेटो की जो maximum height है वो 900 meters है. Balochistan Plateau, as the name suggests, it is the most of the Balochistan province. It has an arid region. Arid regions का मतलब है कि पथरीला and it's not too moist. पानी की कमी है. It has low rainfall. North में इसके टोबा कक्कड़ और चगई hills है. Salt lakes are in the west. Kohe Suleiman and Kirthar are in the east. So, इसकी भी जो physical location है, it is surrounded by 3 different types of things. Now, the map you see on the screen will tell you the exact locations of Potwa Plateau and Balochistan Plateau in Pakistan. Here we are ending the different landforms of Pakistan. By now, you people should have been able to identify and locate different physical features of Pakistan on map, identify the location of Pakistan on the world map and understand that why does Pakistan have this importance where there are surrounding countries. Moving on, ये landforms और land features पढ़ने का मकसद ये था कि हम जब अपने next step में move करें तो we are better able to understand it. Now we are moving on to the climate of Pakistan. सबसे पहले, what is climate? No cheating. Pause your video, write down a definition of climate on your notebook. Excellent. Now, what I want you people to do is that match your definition with the definition I'm going to give you. Study of weather conditions over a long period of time is climate. Weather क्या है? आज बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी लग रही थी मुझे. आज उफ इतनी बारिश हुई कि कोई हद नहीं है, बहुत पानी खड़ा था. The winters have gotten very cold, it's very shivering outside. ये सारी चीजें weather conditions हैं कि टेम्परेचर कैसा था, मौसम कैसा था उस दिन. और अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हम ओवर अ टाइम पीरियड, डेकेड्स के ऊपर, सालों के ऊपर एक कंट्री का, एक रीजन का क्लाइमेट जो है उसको डिस्कस करते हैं. लाइक वी वुड से दैट पाकिस्तान हैज ऑल 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स. 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स मीन्स कि पाकिस्तान में वैरायटी ऑफ climate is observed, but generically
over the long period of time पाकिस्तान का जो climate है, it's mildly hot to mildly cold. Since it's near equator, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. But yes, it experiences all 4 seasons. Weather में आ जाता है temperature, air pressure, rainfall, humidity. Temperature, कितना temperature है by number. Air pressure, कि हवा का दबाव कैसा है. Rainfall, बारिश. और humidity, moisture, हवा में कितनी नमी है. That's what moisture is. आपने अगर कभी न्यूज़ रिपोर्ट सुनी हो, वेदर रिपोर्ट सुनी हो, जो यूजुअली न्यूज़ के बाद चलती है, उसमें उन्होंने हमेशा मेंशन किया होगा ह्यूमिडिटी परसेंटेज. नाउ परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी is basically the percentage or amount of water vapor in air in that area. Then you would have talked or listened to people telling you, अच्छा हवा का दबाव आज पाकिस्तान के इस हिस्से में ज़्यादा था, इस हिस्से में कम था. So yes, that's what air pressure is. Let's discuss the 4 types of climates which are present in Pakistan. The first one being subtropical continental highland. This is the type of climate which is experienced by a certain region of Pakistan. और वो certain region कौन सा है? Northern, Northwestern, Western mountain ranges. अब हमने ये तीनों पढ़ी थी, जल्दी से बताइए इनमें कौन कौन सी आती है. Well done. इसमें Northern में आती है कराकोरम और हिमालय. नॉर्थ वेस्टर्न में आती है हिंदू कुश, वेस्टर्न में कोहे सफेद, कोहे सुलेमान. नाउ दीज आर द रीजन्स जहां जहां माउंटेन है वहां वहां ये वाला क्लाइमेट होता है. और वो क्लाइमेट कैसा है? विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, इवन स्नोफॉल भी होती है, ग्लेशियर्स, यू वुड हैव हर्ड अबाउट दैट. समर्स आर क्वाइट कूल. समर्स में इनकी जो गर्मी की शिद्दत है वो उस लेवल तक नहीं जाती, तो टेम्परेचर वाइज टेम्परेचर लो रहता है. स्प्रिंग इज द रीजन व्हेन दे हैव रेनफॉल. क्यों? क्योंकि सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है. इट इज द टाइम जब ग्लेशियर्स दे मेल्ट एंड यस दे लीड टू अ लॉट ऑफ रेनफॉल. और ये वाला जो क्लाइमेट रीजन है, दिस इज एक्सपीरियंस्ड अलोंग द नॉर्दर्न एरियाज एंड देन मूविंग डाउन टू द क्वेटा रीजन, टू द बलोचिस्तान रीजन. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन दैट पार्ट. इसमें एक एक्सेप्शन है कि आउटर हिमालयाज, मरी और हजारा, ये वो 3 जगह हैं जहां रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, खाली स्प्रिंग सीजन में नहीं होती. सेकेंड टाइप इज सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटो. अब सब ट्रॉपिकल प्लेटो है तो ऑब्वियसली इट वुड गिव यू एन इंडिकेशन कि इट वुड बी इन द प्लेटो रीजन. सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बलोचिस्तान इज द रीजन जहां ये क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है. हॉट एंड डस्टी विंड्स, दे ब्लो फ्रॉम द मे टू द मिड सितंबर. हॉट एंड डस्टी, hot because of the hot summers and dusty because it's a desert and it's an arid region. Extreme hot weather होता है because rainfall is very less, humidity भी बहुत low होती है. Some rainfall in January, सिर्फ जनवरी में कहीं जाके थोड़ी बहुत बारिश होती है. इस रीजन में जो मेजर सिटीज आते हैं वो है सिब्बी और जैकबाबाद. और अगर आपको वैसे पता हो तो सिब्बी और जैकबाबाद मैक्सिमम समर टेम्परेचर्स एक्सपीरियंस करते हैं इन जून, इन मई जून समवेयर. अगर आपने कभी न्यूज़ देखी हो या कहीं पढ़ा हो तो 50 to 52 डिग्री सेल्सियस की रेंज में टेम्परेचर मैक्सिमम तक जाता है सिब्बी और जैकबाबाद में. The third name or the type is subtropical continental lowland. As the name suggests, it is definitely going to be the climate of the plain region. इस प्लेन रीजन में पंजाब और सिंध प्रोविंस आते हैं. पंजाब प्रोविंस बिकॉज इट हैज अपर इंडस प्लेन एंड सिंध प्रोविंस बिकॉज इट हैज लोअर इंडस प्लेन. इधर समर्स आर वेरी हॉट. मॉनसून, अब रेनफॉल स्टार्ट समवेयर डाउन द ईयर वेयर मॉनसून वॉक्स इन. सो जो नदर्न पंजाब है उसमें रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब और सिंध. विंटर इज कोल्ड टू कूल, ना बहुत शदीद सर्दी और ना बहुत कम सर्दी. Then Thal and Southeast desert areas, they fall in this region. They are driest areas and they have very little rainfall because they are deserts, so they have very little rainfall. Peshawar में usually thunderstorms और dust storms होते हैं. Rainfall is just sufficient. And this sums up the climatic region or the climate of the plain region of Pakistan. The last one is tropical coastline. As the name suggests, जो हमने land फीचर पढ़ा था जिसमें भी स्टडीड अबाउट द कोस्टल प्लेन्स, ये क्लाइमेट वहां होता है जिसमें आ जाता है कोस्टल एरिया ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान, द लैंड विच इज नियर टू द कोस्ट ऑफ द सी. ह्यूमिडिटी हाई क्योंकि इट इज नियर टू द सी, तो जो
हवा में नमी है वो बहुत ज़्यादा होती है, because all the time the breeze is flowing from the sea to the land. And when it is coming from the sea to the land, it is bringing water vapor because of the evaporation with it. और जब वो water vapor land की तरफ आता है तो वो जल्दी cool करता है, तो yes, it leads to the high humidity. Annual average temperature जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है. It's throughout the year somewhere near between 30s to 35. इसलिए annually इनका temperature जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है. Hottest months are May and June. इन hottest months में maximum जो difference आता है इन जगह के temperatures में वो सिर्फ ये होता है कि जो humidity है उसका level vary कर जाता है. Temperature नहीं change होता but the humidity level varies. And trust me, जो humidity level vary करता है वो मौसम को बहुत हद तक बदल देता है. आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा that temperature 28 है 27 है but सांस लेना मुश्किल हो रहा है. There's too much water vapor in the air, hubs बढ़ा हुआ है. That's because of the humidity. Rainfall both in summers and winters, obviously it is near to the sea, तो rainfall summers or winters दोनों में होती है because the breeze is all the time blowing. So when the temperature is sufficient enough to cause the water vapor to condense and fall back as the rain, तब they experience rainfall. These are the four main types of climates which are experienced over the past many years in Pakistan. They are called the four types because of the land features of Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान के नक्शे पे या पाकिस्तान की ज़मीन पे there are different land features, उनकी वजह से ये climate affect होता है. Now these are the four different types of climatic regions which are found in Pakistan, और ये पाकिस्तान की land features की वजह से ऐसा climatic region है. ये जो चार हमने डिस्कस किए, right now the map you're seeing on your screen shows these four different type of climatic regions in Pakistan, और वो आपको geographically ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में और किस province में किस तरह का climate है. They are color coded. Look at the key at the bottom of the picture and then you'll be able to relate to the climatic region name and the province where it is experienced. I want you all to pause the video and write down the names of these provinces next to the climatic region on a piece of paper right in front of you. Well done. Now we'll discuss the rest of the chapter in the next lecture. Tab tak ke liye, Allah Hafiz.